ओके, सो वी आर कम हेयर अगेन। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू। चलो, तो यार देखो, आज के ना सेशन के लिए ज़रूरी क्या है, कुछ कुछ पहले चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी है ना हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, उसके बाद ज़रूरी है हमारे लिए लिक्विडिटी। बस ये दो चीज़। ठीक है, ये दो चीज़ है जो पूरा कंप्लीट होके मार्केट बनाता है इसको, यहाँ पे तुम्हारे मार्केट स्ट्रक्चर को। आइदर इट इज बुलिश और इट इज बियरिश। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली इज नथिंग इज इक्वल टू ये फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट में। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वट एवर यू कैन से, ईएमए, स्ट्रैटेजीज, किसी कैंडल का हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, किधर भी ब्रेक करे ट्रेड ले लो। सो यार देखो, एक ही चीज बोलूंगा, किसी भी ऐसे चक्कर में मत पड़ना, वरना लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, मैं भी नहीं हूँ प्रॉफिटेबल, बट जस्ट हाँ, ब्रेक इवन पे हूँ मैं अपने इन्हीं सब चीजों से। ठीक है, तो देखो, दो चीज है मार्केट के लिए, लिक्विडिटी एंड देन फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट जो है वो मूव कैसे करता है। ठीक है, मार्केट मूव करता है, देखो यहाँ पे, ये एक हम मानते हैं एक पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने मूव किया अप साइड का, ये एक अप मूवमेंट हो गया, ये पूरा अप मूवमेंट है एक। ठीक है, अब मार्केट को यहाँ पे क्या मिला हमारे पास, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे, ये एक स्विंग हाई मार्केट ने बनाया हुआ है, यहाँ पे ये स्विंग हाई इस से बनाया है मार्केट ने अभी, ये अभी इसका हाई है। ठीक है, अब अगर मार्केट को इसको ब्रेक करना है, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट को इस स्विंग को ब्रेक करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, जस्ट एक मिनट देना। ओके, सो देखो यार, जब मार्केट को ना, अगर ये एक मूवमेंट मार्केट ने दे दिया है, ठीक है, उसके बाद मार्केट को अगर मूव करना है अप साइड में, और मतलब इसकी लिक्विडिटी हैंड करनी है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, तो देखो मार्केट को अगर ये मूवमेंट मार्केट ने किया हुआ है, ठीक है, अगर ये मूवमेंट मार्केट ने किया है एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक हाई बना हुआ है, ये हाई पॉइंट है। ठीक है, अब मार्केट को क्या करता है, देखो मार्केट जब ऐसे चलता है, ठीक है, तो रैंडमली कहीं भी नीचे नहीं आता है, रैंडमली कहीं भी ऊपर नहीं जाता है, रैंडमली मार्केट में कुछ नहीं होता है। हर कैंडल का अपना एक रीजन है, हर स्विंग का अपना एक रीजन है। रिमेंबर दिस थिंग, रैंडमली मार्केट ना तो ऊपर जाएगा, रैंडमली मार्केट ना तो नीचे जाएगा, रैंडमली मार्केट ना तो कंसोलिडेट करेगा। एवरीथिंग हैज ओन रीजन, मार्केट एक रीजन पे चलता है। ठीक है, तो अब अगर मार्केट को इस स्विंग को ब्रेक करना है, ठीक है, इस वाले स्विंग को मार्केट को अगर ब्रेक करना है, सो व्हाट मार्केट नीड टू डू, मार्केट नीड टू डू, तो देखो, और उसके लिए मार्केट को कहीं भी जाने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, मान लो मार्केट यहाँ पे है एंड नाउ मार्केट को और ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए अब ये वाला जो मूव हो चुका है, ये वाले मूव में मार्केट का फ्यूल जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, एक मूव मार्केट का फ्यूल खत्म। फेयर वैल्यू गैप, ये जो है फेयर वैल्यू गैप, ये काम करता है एज अ फ्यूल बॉक्स। मार्केट यहाँ, फेयर वैल्यू बॉक्स जो है वो काम करता है एज अ फ्यूल बॉक्स। मान लो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर मार्केट इस पे टैप करेगा, यहाँ से मार्केट रॉकेट हो जाएगा। फेयर वैल्यू एक काम करता है रॉकेट बनाने का। ठीक है, देन अगर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, अप साइड में, और मार्केट कुछ इस तरीके से जो है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है, एंड अब मार्केट को, ठीक है, ये जो हुआ है अब, एंड अब मार्केट को इसका
ये वाला स्विंग लो तोड़ना है, स्विंग लो तोड़ना है और नीचे आना है। तो इसके लिए मार्केट पहले क्या करेगा, यहाँ से एकदम नीचे नहीं आ जाएगा, मार्केट के पास फ्यूल नहीं है। व्हाट मार्केट नीड्स टू डू, मार्केट नीड टू टैप दिस फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एंड देन डाउन। इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड और अप डाउन ट्रेंड में मूवमेंट करता है, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी आर सीइंग कि यहाँ पे जो है ये मार्केट के पास एक स्विंग हाई है, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन मार्केट को अगर ऊपर और निकलना है, ठीक है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, सो अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है तो मार्केट ने ना कहीं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर एक फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। एंड जब ये दोनों चीज होगी, then market will retrace to this fair value gap like this and come up to this zone and again ये, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हुआ है ये मूवमेंट का रीजन है, ठीक है, एवरीथिंग इज हैज ओन रीजन। तो अभी अगर ये सेम मूवमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, फेयर वैल्यू में टैप एंड देन ये वाला जो स्विंग है, ये दिस स्विंग इज हैज बीन ब्रेकन। अब ये जो स्विंग है ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ठीक है, ये स्विंग यहाँ पे ब्रेक हो चुका है अभी। नाउ अब ये एक मूवमेंट हो गया, एक मूवमेंट हो गया, व्हाट मार्केट नीड्स टू डू, मार्केट नीड्स टू टेक फ्यूल अगेन। और देखो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है, एक थ्योरी है मार्केट की कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे इफ वी सी movement of market, so how it will be, liquidity sweep, then come to fair value gap plus order block and then continue for bullish और bearish। ये सिंपल मार्केट का एक ही प्रिंसिपल है जिसमें मार्केट वर्क करता है। तो तुम्हें कोई भी बोले ईएमए लगा लो, बोलिंजर बैंड लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो, या फिर ये स्ट्रैटेजी 9-15 की कैंडल, 10-15 की कैंडल, सो सब तुम्हारा काट रहे हैं, ठीक है। कटवाना किसी से नहीं है क्योंकि उनको बताने में कुछ नहीं जा रहा, उनके पैसे लॉस पे नहीं जा रहे, पैसे तुम्हारे, डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें क्या फॉलो करना है, क्या एक्चुअल मार्केट वर्क करता है। डू यू रियली थिंक कि इंस्टीट्यूशन ईएमए पे काम करते हैं? डू यू रियली थिंक कि इंस्टीट्यूशन 9-15 की कैंडल पे काम करते हैं? या डू यू रियली थिंक कि इंस्टीट्यूशन तुम्हारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वट एवर पे काम करते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस इज नथिंग, इज जस्ट फेयर वैल्यू एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो जब भी ट्रेड प्लेस करना, ऑलवेज थिंक कि इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहा है, ऑपरेटर्स क्या सोच रहे हैं, क्या वो ये छोटी छोटी ईएमए पे कौन ट्रेड करता है, लाइक इंस्टीट्यूशन नेवर विल डू दैट, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ दिस। सो यहाँ पे हम थे, सो बुलिश और बियरिश, ये जो पैटर्न है, ठीक है, दिस पैटर्न, जस्ट अ मिनट, ओके, राइट। सो ये जो पैटर्न है जो मैंने अभी बताया हुआ है, ठीक है, ये एनी मार्केट विल वर्क ओनली दिस, सिर्फ इस चीज पे ही मार्केट काम करता है। मूवमेंट जो होती है मार्केट की कैसे डिसाइड होती है, लिक्विडिटी सी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक एंड देन बुलिश और बेयरिश, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अगर ये वाला स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है, ये वाला अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, स्विंग हाई, यहाँ से स्विंग हाई बनाया, फेयर वैल्यू पे टैप किया, क्यों फेयर वैल्यू पे टैप किया, क्यों, देखो जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना कि मार्केट फेयर वैल्यू पे टैप करने आया ही क्यों, वाई, ठीक है। तो जब व्हेन यू हैड क्वेश्चन, व्हेन यू हैव क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑपरेटर। क्यों क्यों यहाँ पे आए, क्योंकि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट एक जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। तो मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में होता है तो मार्केट को क्या करना है, मार्केट को ऊपर निकलना है। एंड जब मार्केट को इस वाले स्विंग का हाई तोड़ के ऊपर निकलना है, सो व्हाट मार्केट नीड्स फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, और मार्केट नीड्स टू फ्यूल, और फ्यूल कहाँ पे है, फ्यूल हमारा है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के पास, ठीक है। अभी आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज फेयर वैल्यू एंड व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक इटसेल्फ, ठीक है। सो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। नाउ अब क्या हुआ है कि ये लिक्विडिटी स्वीप आउट हो चुकी है एज पर दिस प्रोसेस,
लिक्विडिटी स्वीप, देन कम टू फेयर वैल्यू एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये एक मूवमेंट हो चुका है, मार्केट इज एग्जॉस्टेड राइट नाउ, ठीक है। अभी क्या करना है मार्केट को, देन मार्केट को अगर बुलिश कंटिन्यूअसली रहना है, ठीक है, देन व्हाट मार्केट नीड्स टू डू, ठीक है। जो भी ये लाइव देख रहे हैं ना, प्लीज मुझे चैट में बता दो, नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट मार्केट विल फॉलो, फटाफट चैट में बता दो प्लीज, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि समझ में आ रहा है। इस मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। देखो बेसिकली ना कंसोलिडेशन, देखो जो चार्ट देखने का नजरिया है ना, वो अपना रखना बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे। हो सकता है कि ये जो मूवमेंट है, ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिखेगा कि अभी मार्केट इस टॉप पे है और इस स्विंग को अगर मार्केट को ब्रेक करना है, ठीक है, देन मार्केट नीड्स टू कम इन दिस फेयर वैल्यू गैप लाइक हेयर एंड देन अगेन, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट द बुलिश स्ट्रक्चर लाइक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब भी मार्केट इस तरीके से रैपिड मूव देता है, रैपिड, ठीक है, तो जब भी मार्केट रैपिड मूव देगा, इट विल कंसिस्ट फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। रैपिड मूव में हमेशा इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। तो देखो कंसोलिडेशन ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना, क्या देखना है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, ये वाली लिक्विडिटी जो है वो हमारी स्वीप हुई है, दिस वन, दिस स्विंग हाई, लिक्विडिटी स्वीप आउट। अभी मार्केट को क्या करना है, इफ मार्केट नीड्स टू कंटिन्यू, देन यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप होगा मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। अब जब यहाँ पे तो कभी देखोगे कि 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट यहाँ पे एंटर कर चुका है, सो यू नीड टू चेंज 1 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टू फाइंड आउट मोर नेस्टेड फेयर वैल्यू गैप। मतलब कि ये एक घंटे पे फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर ये 15 मिनट पे है, ठीक है। एंड नाउ वी विल टेक इनटू 1 मिनट एंट्री पैटर्न, ठीक है, हम 1 मिनट पे एंट्री लेंगे। बट द थिंग इज कि क्या होना चाहिए, देखो अब ट्रेड के लिए क्या होना चाहिए, द थिंग इज यहाँ पे कि देखो मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, और हमारा प्रोसेस है लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक एंड देन कंटिन्यू आइदर बोथ साइड, डाउन साइड और अप साइड, ठीक है। व्हाट वी नीड्स टू डू, अब देखो यहाँ पे एक है, अगर मार्केट यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को रैपिडली ब्रेक करता है या फिर क्लोजिंग दे देता है या फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करना इन द सेंस कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है या फेयर वैल्यू गैप है उससे रिजेक्शन नहीं लेना, उससे रिजेक्शन नहीं लेना एंड देन उसी के अंदर क्लोजिंग दे देना। एंड वन मोर थिंग, जो रियल फेयर वैल्यू गैप ऑन ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो सिर्फ एक बार ट्रेड किए जा सकते हैं। मतलब कि जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट जब यहाँ पे था, ये वाला ट्रेड नहीं हुआ था, मार्केट ने इसको टच नहीं किया था, सिर्फ एक बार टच किया जा सकता है, एक बार के बाद सेकेंड टाइम दैट विल नॉट वैलिड। और पॉसिबिलिटीज, मार्केट जब सेकेंड टाइम इसके पास आएगा तो यहाँ से कंसोलिडेट करके देन डाउन अपसाइड, क्योंकि एक बार ये यहाँ पे यूज हो चुका है, सो इट इज नॉट वैलिड एनी मोर। कोई भी फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, ओनली वन टाइम, ठीक है। एंड देन नाउ, ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे थे, हाँ ये वाली लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू, लिक्विडिटी स्वीप। नाउ अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप पे आता है, रैपिड मूव करता है और इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आ जाता है, ठीक है, एंड देन ऊपर जाने का दिखाने लगता है, कोशिश करता है कि हाँ ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल क्विकली चेंज योर माइंडसेट टू दैट कि अभी क्या हो चुका है। अगर मार्केट को सच, अब यहाँ पे देखो साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट आई विल टेल यू कि मार्केट ने हमें बताया यहाँ से रिजेक्शन लिया, दैट्स इट। यहाँ पे रिजेक्शन जब मार्केट ने लिया, वी नो कि मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप साइड, ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जब सेकेंड टाइम मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे वापस आया, यहाँ वाले पे, ठीक है, ये वाला ऑलरेडी यूज्ड है, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है और तुरंत मूवमेंट नहीं देता है, देन व्हाट, मार्केट इज टेलिंग अस कि आई एम नॉट गोइंग टू अप डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे दो चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर मार्केट उसको
टच करता है वहीं पे क्लोजिंग दे देता है, या फिर बहुत शार्प मूव करता है, ठीक है, शार्प मूव करता है। तो यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जब मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है, ये मार्केट ने मूवमेंट दिया है अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, यानी कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के पास में, जो कि एक बार हो चुका है। तो टेक्निकली मार्केट को इस यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए, टेक्निकली मार्केट को एक बार टच करके ऊपर निकल जाना चाहिए इफ मार्केट वांट्स टू कंटिन्यू टू हायर और लोअर। सेम सिनारियो बुलिश के लिए भी और बियरिश के लिए भी, ठीक है। अब मार्केट अगर सच में यहाँ पे निकलना है, देन मार्केट नीड्स टू लाइक दिस। एंड अगर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे वापस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है, या फिर जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने यहाँ पे बनाया होगा मूवमेंट के लिए, अगर ऊपर निकलना होता तो यहाँ से ये निकलता, बट अगर डिसरिस्पेक्ट करी है एंड देन सेकंड ऑर्डर ब्लॉक के पास आ गया है, ठीक है। तो देखो हम कहाँ पे, वी वी आर पेइंग टू अटेंशन। जैसे इस मूवमेंट में क्या था, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट अगेन आया टैप करके ऊपर, ठीक है, दिस इज ओके फाइन, बुलिश है मार्केट। अब अगर बुलिश है तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, बट इफ मार्केट नॉट एक्स लाइक यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है, मार्केट अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की या फेयर वैल्यू की आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और मार्केट इसको सीधा ब्रेक कर देता है, ब्रेक करता है, क्लोजिंग दे देता है, या फिर एक बार हल्का सा टच होके ऊपर जाता है, देन सेकेंड टाइम, देखो फेयर वैल्यू गैप से ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट शार्प मूव करता है, ठीक है, कभी भी स्लो मूव नहीं करता, राइट, पिन मारता है एंड देन कंटिन्यूअसली डाउन साइड और अप साइड, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, सो व्हाट वी एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे हमें अटेंशन पे करनी है। और देखो दुनिया को बुलिश रहने दो, तुम्हें मार्केट एक एक चीज बताता है हर एक कैंडल में, व्हाट मार्केट इज गोइंग टू डू। जब यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, लाइक यू आर सेइंग कि ओके नाउ वी आर कन्वर्टिंग इनटू बियरिश ट्रेंड, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, दिस इज, एंड इसके ऊपर मार्केट के पास कुछ नहीं है, नो ऑर्डर ब्लॉक, नो फेयर वैल्यू गैप, नो लिक्विडिटी। सो आस्क द क्वेश्चन, why market will go upside right now, why it will go upside, और really अगर ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, if market needs to continue to the bullish trend, then मार्केट को यहाँ वाला जो फेयर वैल्यू गैप था उससे रिजेक्शन लेके जाना था, बट अगर नहीं गया है, सो व्हाट इट मीन, मार्केट इज चेंजिंग इज डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो नाउ अगर फर्स्ट वाले पे, ठीक है, जब मार्केट इस तरीके से रिजेक्शन देता है ना, मतलब अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है किसी फेयर वैल्यू गैप की, तो देखोगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना होगा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज बियरिश वन, ये ट्रेंड चेंज के लिए है, क्योंकि अगर बुलिश होगा, जब तक मार्केट बुलिश है, ठीक है, देन इस लेग में देयर वुड नॉट बी फेयर वैल्यू गैप, डाउन साइड में नहीं होगा फेयर वैल्यू गैप, बियरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाएगा मार्केट। अगर मार्केट ने बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, दैट मीन मार्केट इज टीचिंग अस और सेइंग अस कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकता। नाउ व्हाट मार्केट विल डू, कैन वी कॉल इट एसएल हंटिंग ऑल्सो। यार देखो एसएल हंटिंग के पीछे पड़ोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि एसएल हंटिंग पे जस्ट लाइक तुम्हें पता नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं ना कि देखो एक सिनारियो बताते हैं, किसी ने ना, नो वन ने बोला है चैट पे कि इट्स जस्ट लाइक एसएल हंटिंग, चलो ठीक है अपन मान लेते हैं एसएल हंटिंग नहीं होती। एसएल हंटिंग एक सिनारियो बताते हैं, देखो जैसे यहाँ पे एक, जस्ट अ मिनट, जैसे यहाँ पे ये चार्ट है, ठीक है, दिस हाई, दिस लो, दिस हाई, दिस लो, एंड दिस हाई एंड दिस लो, ठीक है, दिस इज द चार्ट, ठीक है। नाउ अभी क्या है, तो अभी हम अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। नाउ अगर इन केस मान लेते हैं ये वाला जो चार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो मैंने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस वन इज ऑन लाइक 15 मिनट्स, बट ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। बट द थिंग इज, अगर इन केस, ठीक है, इन केस लाइक अगर ये सोच रहे हो कि मार्केट इसको हंट करने जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी है, बट अगर इन केस मान लेते हैं कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यू आर सीइंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, पॉसिबली इट विल गो,
बट अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कुछ यहाँ पे ऐसा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है या ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इट विल नॉट गो देन, इट विल टच एंड दिस। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस। और इसके अलावा जस्ट लेट मी चेक, क्लियर इट। ठीक है, सो ठीक है, हम यहाँ पे थे। ठीक है, सो देखो ये प्रोसेस है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मार्केट, लिक्विडिटी सीप, कम टू फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। नाउ तो ये प्रोसेस समझ में आ गया? चैट पे बता दो एवरीवन जो भी देख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब चलो इसी का ना थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज गुड ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज गुड फेयर वैल्यू गैप। मतलब देखो कई बार मार्केट ना ट्रैप करता है तुमको, फेयर वैल्यू गैप दिखाएगा एंड यू विल फील कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा या फिर इस तरीके से। ठीक है, बट इट विल नॉट। सो मार्केट ट्रैप भी करता है। ठीक है, तो अभी देखो हम ना एक लाइव चार्ट देखते हैं नैस्डैक का। ठीक है, क्योंकि निफ्टी और ये सब बंद है अभी, और ये जो मार्केट का फॉर्मूला है, ठीक है, ये मार्केट का फॉर्मूला आई कैन बेट ऑन इट, आई कैन 100% श्योर अबाउट इट। any market, either it is index of Indian market, Pakistani market, US market, Euro market, and Chinese, Asian, Gifty Nifty, Bank Nifty, Sensex, Dow Jones, Nasdaq, cryptocurrency, Forex, Euro USD, whatever, जिस भी इंडेक्स में कैंडल बन रही है, जो भी मार्केट ट्रेड किया जा सकता है, that this formula, this process of market is supreme। मार्केट इसी प्रोसेस पे चलता है। नो ईएमएम, नो सुपर ट्रेंड, नो नथिंग। सिर्फ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट सी व्हाट इज एवरी कैंडल इज सेइंग। ठीक है, नाउ डिड एनीवन नो दिस स्ट्रक्चर, लाइक ये प्रोसेस सबको पता था पहले से? चैट में बता देना जल्दी सा, या दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू टू लर्न। कूल। हाँ चलो, सो I'll give, okay चलो, so let's go into chart quickly। ठीक है, अब हम चार्ट पे आ जाते हैं। तो हमारे पास वेयर इज नैस्डैक, ये रहा। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये नैस्डैक का चार्ट है, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नैस्डैक का चार्ट है। दिस इज ऑन 1 मंथ। और एक चीज और बता देता हूँ, थ्योरी जैसे ना। अच्छा मेरे को ये बताओ कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि आज मार्केट क्या कर सकता है? चैट में बता दो कौन कौन है जिनको ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि फील होता है मार्केट ऊपर जाएगा, बट व्हेन यू टेक ट्रेड मार्केट विल रिवर्स और एसएल हंट। ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम पता है क्यों है, बताता हूँ अभी चैट में। ठीक है, मी मैं, ठीक है भाई। ओके, तो देखो यार अभी ना सामने अपन ना एनालिसिस करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो और देखो ये चीज याद रखना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, liquidity sweep, come to fair value gap or order block and then continue, same for the bearish condition। ओके, इसको याद रखना अभी, we'll see this thing। ठीक है, now and one more thing I was going to tell you, जिसको ओके, ऑल गुड, स्क्रीन आ रही है? चैट में बता दो भाई जल्दी से।
कूल, ठीक है। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, चार्जर निकल गया था लैपटॉप का। ओके, तो वेयर वी वर, ओके। तो हाँ देखो, आई वॉज टेलिंग यू जी, जिनको ये प्रॉब्लम आती है ना कि मार्केट लग रहा होता है कि ऊपर जाएगा, बट यू विल प्लेस द ट्रेड फॉर बाय साइड बट मार्केट विल हंट योर स्टॉप लॉस, ठीक है। या फिर लग रहा होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, देन यू विल प्लेस पुट साइड बट यू विल गेट द स्टॉप लॉस, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू टू कॉन्करर दिस सिचुएशन और दिस थिंग, ठीक है। देखो अपने को क्या करना है ना, एक चीज याद रखना है जो बता रहा हूँ अच्छे से, एकदम, ठीक है। ओके, सो नाउ हियर वी आर। देखो जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेली बायस, ठीक है। डेली बायस क्या है? डेली बायस मार्केट का क्या मन है करने का, डेली बायस, ठीक है। देन उसके बाद रीजन व्हाई मार्केट विल नीड टू डू दिस थिंग, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक चीज एंड और याद रखना कि जो एनालिसिस होती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं 15 मिनट में एनालिसिस करके 1 मिनट पे एंट्री कर लेते हैं या फिर कुछ इस तरीके से, ठीक है, बट देन दे विल गेट स्टॉप लॉस। सो व्हाट द थिंग इज हियर, the thing what you have to do, you have to do like this, ठीक है। you will have to, if you are trading in intraday, और जैसे हम इंडियन मार्केट पे करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो लाइक इसका मैक्सिमम टाइम आप कंसीडर कर सकते हो 1 डे का और 1 मंथ का, टू स्टार्ट द एनालिसिस टू गेट द कंटेक्स्ट, ठीक है। हमें कंटेक्स्ट मिलेगा कि व्हाट इज एक्चुअल गोइंग ऑन और मार्केट अभी क्या कर सकता है, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस याद रखना, आई विल श्योर यू विल नेवर गोना फेल इट इफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मंथ, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, 1 मंथ, 1 डे, ठीक है, सॉरी 1 वीक। और आप शुरू कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में 1 वीक से भी, बट आई विल प्रेफर 1 मंथ टू गेट अ कंटेक्स्ट, ठीक है। देन 1 वीक टू फाइंडिंग आउट इट, प्लान योर ट्रेड, ठीक है, इस तरीके से। नाउ 1 डे, ठीक है, नाउ 1 डे इट इज, एंड देन 4 hours, okay, and now 1 hour, ठीक है, now 15 minutes, and now 5 minutes, now 1 minute, ठीक है। See, many people will think this is a lengthy process, who will do that, but पैसे कमाने हैं ना, ऐसे ही कमाते हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर और मार्केट की साइकोलॉजी यू विल नेवर इन अंडरस्टैंड ऑन 1 मिनट or 5 minutes or something like that until you will get the context of what is actually going on since last 1 week or since last 1 day, ठीक है। तो जैसे बहुत बार होता है ना कि मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई, देन सडनली व्हाट विल डू, मार्केट इज जस्ट लाइक दिस फॉल, एंड वंस दिस फॉल हैपन, सेम डे कोई नहीं पकड़ पाता, सेम डे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये फॉल पता होता है कि आया ही क्यों है। जब ये फॉल हो चुका है, एक्चुअली व्हाट पीपल आर डूइंग, व्हाई यू आर गेटिंग लॉसेस, व्हाई आई वाज गेटिंग लॉसेस, कि सी देखो, बहुत जितना ना ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतनी अच्छी चीज है, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट मेक वन रूल वन प्रिंसिपल, जैसे मार्केट वर्क करता है, डू वन सिंपल एनालिसिस एंड देन यू विल गो, इफ यू विल फाइंड योर सेटअप, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक ट्रेड, उस मोमेंट पे ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर कि नहीं लिया, डर के नहीं लिया कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, व्हाट विल, होने दो, व्हाट द हेल, स्टॉप लॉस जा रहा है ना, जाने दो, एक बार स्टॉप लॉस जाएगा, यू विल फिगर आउट कि why my stop loss has been taken, why when my analysis is good, my everything is good, मेरा SL क्यों हिट हुआ। so what you have to do, you have to take trade at any cost, if you are seeing market, तुम्हारा सेटअप दिख रहा है, go 100%, go 100% फॉर दैट ट्रेड until unless अगर उस सेटअप पे उस एनालिसिस पे खुद की आप गलत नहीं होगे, then you will not never gonna find it the reason why market did this or did that, am I correct?
whatever I'm saying, is it new, it is eyes opening or what? Tell me on chat. ठीक है, चलो वी आर कंटिन्यूइंग। अब नाउ कि जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग ये वाला जो, यार एपिक पेन खोल लेता हूँ एक मिनट। हाँ यार, मैं ऐसे डेली लाइव एनालिसिस करके ना वो चीजें बता दूंगा ना यार, यू विल ब्लो अप। यू विल नेवर गोना से ईएमए देख लो, यू विल नेवर गोना से इसका लो टूटे पुट ले लो, इसका हाई टूटे बाय ले लो। लेके देख ही लिया ना क्या होता है हर बार। सो यार देखो, सिंपल थिंग्स वर्क्स इन मार्केट। डो नॉट गो विद समथिंग, ठीक है? डू नॉट गो विद 915 की कैंडल। डू लाइक सी, देयर इज नो बेनिफिट, राइट? सो सी, अब देखो ये वाला, हाँ मैं ये स्ट्रक्चर बता रहा था, ठीक है, कि सम टाइम इट हैपन, सबके साथ होता है ना कि मार्केट अपने को बुलिश दिखता है, लाइक वी आर सीइंग इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स से बुलिश है, राइट? अब नाउ व्हाट पीपल विल डू, पीपल विल मार्क दिस सपोर्ट, राइट? मैं बताता हूँ कि हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, लाइक एक्चुअल में। And you will relate it, you will relate, for sure you will gonna relate it, right? So what, or like how we trade, like see, market is in 15 minutes, like हम जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी में कितने मिनट का मैक्स टू मैक्स चार्ट देखते हैं? 15 मिनट्स से एवरीवन, मैक्स टू मैक्स। किसने भी 15 मिनट से ज्यादा का देखा हो तो बताओ मुझे। ठीक है, एक ने देखा हुआ है। मोस्टली 15 मिनट्स ही देखते हैं, सिर्फ 15 मिनट्स, 5 और 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स। 98% आर 15 मिनट्स। यू नो द रीजन वाई? बिकॉज ऑल यूट्यूबर्स, गुरुज, स्कैमर्स will to tell you like this, ठीक है? What they will tell you or what you will place trade like this, I will tell you, like, and everyone say yes if you can relate. This is high, this is low, this is higher high, this is higher low, this is higher high, and now the game is begin. Now the game is begin. Market will show you this is support, ठीक है? Market will show this. Why market is showing you? See, देखो यहाँ पे ना, like psychology matters a lot. Like देखो, इंस्टीट्यूशनल को रिटेलर से पैसा लेना है, ठीक है? क्या इंस्टीट्यूशन अगर तुमसे पैसे कमाना चाहते हैं, will they tell you कि I am coming on support, you just buy और हम साथ में रैली करेंगे? Will they tell you? इंस्टीट्यूशन वांट टू मेक यू अर्न मनी कि हाँ भैया ये सपोर्ट है, आ जाओ सब लोग बाय कर लो, फिर हम साथ में अपसाइड की रैली करेंगे। That will never gonna happen. That will never gonna happen. So why this move has been created? ये मूव क्यों बनाया गया है? ये मूव बनाया गया है ताकि रिटेल ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो उन्होंने यूट्यूब से सीखा है, जो उन्होंने चार्ट पैटर्न सीखे हैं, जो उन्होंने यू नो हेयर एंड देयर 100 वीडियोस देख ली, 915 की कैंडल और वट एवर, यही सीखा है ना। एवरीवन विल प्लेस लाइक इस सपोर्ट पे, ठीक है? इस सपोर्ट पे व्हाट पीपल विल गोना डू, पीपल विल गोना डू लाइक दिस, ओके नाउ इट इज इन सपोर्ट, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डू जस्ट बाय ट्रेड, ठीक है? I have to put my buying trade. That's it. But what actually market will do with them, market will say, okay, you can trade it, but now this high is broken and then this all way up. Like seriously, it is all way up. Now you will stuck. Why? When market is bullish like this, ठीक है, when market is bullish like this, like higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, when like this move, ये जो move है ना, this is actual institution want. This move will blow your capital, this move will not give you chance to enter,
Am I wrong or correct? This move will not gonna save you. This move will not give you a single penny or a single rupees. Not gonna 1 rupees. This move will not give you. This is known as a brutal move. This is known as a brutal move. Okay, this is institution right now. So I was telling the same thing. So what you have to do up now, everyone having question, right? Like, okay, so why market fall from here when market is up direction? Everyone have क्वेश्चन दिस कि मार्केट जब अप डायरेक्शन में तो यहां से मार्केट इतना शार्प फॉल कैसे दे सकता है? डू हैव एनी क्वेश्चन? और सबको पता है ये फॉल क्यों हुआ होगा? क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, साइकोलॉजी, थ्योरी एंड एनालिसिस। ओके, कोई तो टाइप कर रहा है कुछ, ठीक है, राइट। सो देखो, ये वाला जो फॉल हुआ है, ठीक है, हम चार्ट देखते हैं 15 मिनट्स पे, हमें दिख रहा है सपोर्ट है, हमें दिख रहा है मार्केट बुलिश है, बट ऑन आ लॉन्गर टाइम फ्रेम इज इट नॉट लाइक दिस कि एक हम 15 मिनट्स के अलावा हम देख रहे हैं, लेट्स सपोज 1 आवर चार्ट और 4 आवर चार्ट। 4 आवर चार्ट में मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट अप तो गया है, ठीक है, मार्केट ने वापस लो ब्रेक किया, ठीक है, देन मार्केट ने ना थोड़ा सा अप मूव दिया हुआ है। अप मूव जो ये दे रहा है 4 आवर्स पे, ठीक है, जो ये मार्केट अप मूव 4 आवर पे दे रहा है, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे 4 आवर का हम सपोज चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो मार्केट 4 आवर्स में यहां से आया है, लेट्स सपोज ये 4 आवर का चार्ट है एंड दिस इज 15 मिनट्स चार्ट वेयर वी आर ट्रेडिंग। सो मार्केट यहाँ पे आया है एंड मार्केट कहाँ से आया है? अप से डाउन आया है, ठीक है। नाउ व्हाट मार्केट इज गोइंग टू डू, हो सकता है मार्केट यहाँ पे पिछला कोई 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक हो, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप हो, मार्केट विल टेक द रिजेक्शन। एम आई राइट और नॉट? मार्केट विल टेक द रिजेक्शन, ठीक है। नाउ 4 आवर में क्या बन रहा है? 4 आवर्स में बन रहा है ये पैटर्न, ठीक है, 4 आवर्स में ये पैटर्न बन रहा है एंड नाउ मार्केट विल फॉल लाइक दिस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि व्हेन मार्केट नीड्स टू कंटिन्यू, व्हेन मार्केट नीड्स टू कंटिन्यू, लाइक इट विल क्रिएट अ फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। 15 मिनट्स में हमें क्या दिखा रहा है मार्केट कि वी आर इन बुलिश, बट एक्चुअली व्हाट आर वी? एक्चुअल में व्हाट वी आर, चैट में बता दो। बियरिश। नाउ बियरिश है, अगर मार्केट 4 आवर्स पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इट विल मोर स्ट्रॉन्ग देन 15 मिनट्स और नॉट? Will it strong than 15 minutes or not? 4 hours. Yes, it is. So now you get why this fall happen out of the sea. देखो, काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि यार ये फॉल कैसे आ गया, ये फॉल, इतना बड़ा फॉल कैसे आ गया, जब मार्केट सब कुछ सही चल रहा था, इतना बड़ा फॉल कैसे आ गया? फिर दे विल गो टू यूट्यूब, दे विल गो टू न्यूज, दे विल फाइंड इट हेयर एंड देयर, जस्ट वो लोग ना अपने आप को संतावना देना चाहते हैं कि हाँ न्यूज की वजह से हुआ होगा। नो, यू आर फूल, यू आर नॉट लुकिंग द चार्ट। चार्ट इज क्लियरिंग टेल यू डूड आई एम गोइंग टू डाउन डायरेक्शन, इज इट नॉट? चार्ट इज गोइंग टू, चार्ट इज टेलिंग यू आर नॉट इन दिस लाइक डाउन मूव, ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होंगे, चार्ट इज टेलिंग यू आई एम गोइंग टू डू दिस, व्हाई यू आर टेकिंग दिस मूव ऑन 15 मिनट्स? इज इट? This is the main reason why people SL hit. Is it? Is it? ठीक है, नाउ चलो लेट्स सी। ओके, ठीक है, अपन देख लेते हैं थोड़ा सा ये सब कुछ, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, सी द बिग इज टाइम फ्रेम, द स्ट्रॉन्गर इज फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है।
And same what we have to do, like okay, we know that here is just a minute, like is it 15 minutes चार्ट, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, हम चार्ट हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं, then I'll quickly dive into chart to show you how actually it is working. Like हमारे पास एक we are having 1 minute chart, like we are having 1 hour or 4 hour chart. Like 4 hour chart is saying like this, okay, and like 4 hour chart is going on like this. It is not completed yet, okay. Now what we can find, we will find if we have any fair value gap or any order block on 4 hours or not. Yes, it is, like we are having, let's suppose we have. So what, like after seeing this move and this move, what you will feel market will next to do, you will clearly see like, oh okay, market will go like this and then this. Now then it will create fair value or order block like here, and then again fall or this, and it will continue. Is it correct? Is it understanding कि हो रहा है? हाँ, समझ आ रहा है एक एक शब्द? कूल, ठीक है. सो लेट्स सपोज इट इज लाइक 4 hours टाइम फ्रेम, एंड 4 hours पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप है विच इज बियरिश, राइट. एंड सो हमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड होगा, राइट, वी आर एक्सपेक्टिंग टू मार्केट गो देयर एंड फॉल फ्रॉम हेयर लाइक दिस, ठीक है. एंड जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगा, ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे गया है, ठीक है, वी सी ऑन 4 hours दैट इट इज एंटर. What you have to do, you will change your time frame into 1 hour to find out more specific, like as I say, like it is nested. On 4 hours you will get this fair value gap, right? Maybe you will go 1 hour, you will get this fair value. You will go 15 minutes. In 15 minutes, like 4 hours, this is 1 hour, and in 15 minutes you will get this fair value gap. So go in 1 minute and you will check out the order block like this, okay. So what you have to do, like go to deep into deep, that's it, okay. So what will market do? Sometime you will see how market reacts on this order block and how perfect entry there is. Like market is going up out of nowhere, okay, and then 4 hours chart like this. Now you will see how quickly market, not like this, market will not do like this, और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगा मार्केट, यहाँ क्लोजिंग नहीं देगा, या फिर बहुत बड़ा ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं दे देगा, ठीक है. नाउ व्हाट यू विल सी, मार्केट विल जस्ट डू लाइक एंड पिन अप इन दिस एंड देन फॉल like this, one pin on one point. Like अगर order block 19,822 पे है, market will pin on 18,983 और something, एक दो नंबर ज्यादा. Is it or not? होता है कि नहीं होता है? ये मार्केट में, मार्केट से पिन मारता है. So this is the things you have to check it out. This is the all things that the market is doing. और एक स्पाइक्स, हाँ यूट्यूब से सीखा है भाई स्पाइक. You don't know the reason about these spikes. Cool. Okay, so is it very tough to like find out the nature of market or find out what market is going to do? Is it tough right now when I am telling you all this thing? No, cool. अपने आप करना ब्रो, फिर पता चलेगा. थोड़ा सा तो टफ है, मतलब भैया बड़े टाइम फ्रेम में प्लान करके स्मॉल टाइम में ट्रेड करना है. अभी मार्केट का असली फेस पता लग रहा है. कूल, हाँ कमी ऐसे ही करना है ब्रो. देखो चलो अभी हम चार्ट पे आ जाते हैं. ये नैस्डैक है अपना, नैस्डैक अभी ओपन है, ठीक है. तो ये मत बोलना कि ओपन नहीं था और ऐसे करके कुछ भी बता दिया, ठीक है. चार्ट इज ओपन करेंटली, ठीक है. नाउ इट इज 1 month चार्ट, ओके. हम शुरू करेंगे 1 month से. नाउ व्हाट वी आर सीइंग, ठीक है. देखो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, पहले ये समझ लो. फेयर वैल्यू गैप होता है
कंसेक्यूटिव 3 कैंडल, लगातार 3 कैंडल के बीच का जो गैप होता है, लाइक दिस दिस इज फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, लाइक दिस वन, दिस इज फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, लाइक 1 2 3, और 3 कैंडल के बीच में दिस गैप इज नोन एज अ फेयर वैल्यू गैप। नाउ अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो स्ट्रांग है, लाइक इसमें मार्केट वापस रिजेक्शन लेके क्विकली ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। सो पॉसिबिलिटीज व्हेन, देखो पॉसिबिलिटीज है जब 1 2 और थर्ड कैंडल इसके, लाइक दिस कैंडल हाई इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, जब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल में तीसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप, एंड सी देयर इज टू वर्ड स्ट्रॉन्ग प्लस हाई प्रोबेबिलिटी विन ट्रेड की, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है विनिंग ट्रेड की। सो व्हाट इज कि यू विल सी लाइक दिस इज सेकेंड फेयर वैल्यू गैप, इज इट, है कि नहीं, सेकेंड फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, है है यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप, यू विल सी देखो 1 2 3, 3 consecutive candle, so this one here, is it fair value gap? देखो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ना, फेयर वैल्यू गैप होता है कि, देखो मैं बताता हूँ फेयर वैल्यू गैप, थोड़ा सा लास्ट सेशन में बताया हुआ था बट इस बार फिर बता देता हूँ व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। लाइक मार्केट इज गोइंग ऑल अप, दिस मूव, इस मूव में कौन लोग हैं, इस मूव में सिर्फ क्या हुई है, फास्ट मूवमेंट नहीं, इस मूव में ओनली बायर्स, सिर्फ बायर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही हैं, इज इट, है कि नहीं है इस मूव में, यस ओके। सो अब देखो कोई भी मार्केट ठीक है, दो लोगों पे चलता है, बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। अब अगर इस मूव में सिर्फ बायर्स हैं, क्या सेलर्स को मौका मिला है अभी मार्केट में एंटर होने का, नहीं। सो अभी क्या है, अभी ये जो मूव है ये तुम्हारा फेयर नहीं है, फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ बायर्स को चांस दिया है, सेलर्स को नहीं दिया है, क्लियर है, इसमें बायर्स को चांस है, सेलर को चांस नहीं है, ये अभी अनफेयर है, अनफेयर है ना, जब मार्केट सेलर को भी चांस देगा, ठीक है, देन इट वुड क्रिएट अ फेयर वैल्यू गैप, दिस इज अ फेयर लाइक बायर्स एंड देन सेलर्स देन अपसाइड, समझ आ गया व्हाट इज फेयर वैल्यू एक्चुअली, when market gives the chance to sellers or buyers itself, like if market is like going in down direction continuously like this, like market is doing like this, okay, so what market will do, market will give the chance to this buyers, now it is fair price action, it is fair price action, this one is fair price action but it is alone not a fair price action, ठीक है, this is not fair, this is fair, it is sellers and then buyers, so basically right, अब now, ठीक है, देखो फेयर वैल्यू गैप 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल होती हैं, ठीक है, 1 2 3, राइट, और अब जैसे ये वाला देखोगे, एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाते हैं कि दिस इज 1 कैंडल, this is 2 candle, this is 3, but there is no fair value gap, there is no fair value gap because 1 2 3 तीनों के बीच में कुछ है, गैप नहीं है, ठीक है। नाउ अब अगर यहाँ पे देखेंगे this one here, so 1 this candle, 2 this candle and 3 this candle,
सो यहाँ पे कोई ऐसी, देखो अगर यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कोई ऐसी विग होती, ठीक है, देन इट वुड नॉट बी अ फेयर वैल्यू गैप। लाइक एक मिनट, यहाँ पे नहीं, देखो जैसे ये है ना, अगर ये विग होती, ये कैंडल और ये कैंडल साथ बनती, मतलब इस कैंडल में एंड इस कैंडल में, इन केस कोई गैप नहीं होता, ठीक है, ये गैप नहीं होता यहाँ पे, तो फिर फेयर वैल्यू नहीं होता। जस्ट लाइक दिस, 1 2 कैंडल 3 कैंडल, बट इट इज नॉट अ फेयर वैल्यू, राइट? इट इज नॉट अ फेयर वैल्यू थिंग। ओके, सो लीव इट। नाउ समझ में आ गया व्हाट इज फेयर वैल्यू? भैया इसमें और इम्बैलेंस में क्या फर्क है? इम्बैलेंस वही है कि फेयर की अभी अनफेयर है प्राइस, इम्बैलेंस अनफेयर है, फेयर वैल्यू इज बैलेंस प्राइस एक्शन। नाम से नहीं समझ आ रहा? लाइक नाम इज एवरीथिंग इज सेइंग ना, इम्बैलेंस मतलब कि बायर्स और सेलर्स में इम्बैलेंस है। व्हेन बायर्स इज देयर, व्हेन सेलर्स इज देयर, दैट इज बैलेंस, है ना? Imbalance, you will listen inefficiency and everything. Inefficiency is also like sell side inefficiency या बाय, जब मार्केट एकदम consecutively गिर रहा होता है एक एक तरीके से, दैट इज बाय साइड inefficiency, वहां पे बायर्स अवेलेबल ही नहीं है, देन मार्केट विल गो देयर टू गिव अ चांस टू बायर्स ऑल्सो, है ना? तो दैट इज efficiency or that is balance, and that is also a fair value. Fair value is like when market provide both buyers and sellers the chance to get into the market, बायर्स को भी मौका दे रहा है, सेलर्स को भी दे रहा है, एंड देन कम टू दिस इज अ फेयर वैल्यू। ऑल गुड? कूल। चलो अभी ये तो बहुत इजी था। हाँ भाई, मार्केट इजी है ब्रो, मार्केट इजी है, इट जस्ट पीपल आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। देखो, एंड वन मोर थिंग आई विल जस्ट रिक्वेस्ट, डू नॉट मेक योर चार्ट मेसी एवर, यू विल नॉट सी दी थिंग्स। और एक और चीज, जैसे बहुत सारे लोग पता है क्या देखते हैं कि आई शो यू लाइक दिस, ये मंथली चार्ट है, ठीक है, दिस इज अ मंथली चार्ट। नाउ व्हाट पीपल विल सी, दिस इज एज अ सपोर्ट लेवल और नॉट, लाइक इट्स अ मंथली चार्ट है, रेजिस्टेंस था अब टूट गया, तो अब ये क्या हो जाएगा? सपोर्ट। पीपल विल से, इज इट? दिस इज एनालिसिस लाइक दे डू। कूल। बट व्हाट आई टेल यू एक्चुअली, ओके, देखो, अगर ये चीज देखोगे ना, एक चीज यहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये वाली कैंडल देख रहे हो ना, दिस वन, कि जहां पे सपोर्ट मार्क करने की कोशिश कर रहे हो, दिस कैंडल इज ऑन अ मंथली बेसिस एंड इट इज 1 दिसंबर 2021, ठीक है, आज से 3 साल पहले की कैंडल है ये। इट इज वैलिड और नॉट? इट विल नॉट वैलिड, राइट? हमें मार्केट का अभी देखना है ना, 4 साल पहले उसने क्या किया है, आई डोंट गिव अ फक, लाइक आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। सो देखो, बहुत पीछे का हमें देखना ही नहीं है, वी डोंट वांट टू सी, लाइक वी वांट टू सी लाइक दिस ओनली, दैट्स इट। दिस वन इज इनफ, दिस चार्ट इज इनफ, ठीक है। सो नाउ हम देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया। हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नाउ हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक इनिशियल पे ये फेयर वैल्यू था, ठीक है, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप बिटवीन टू कैंडल्स, ठीक है, लाइक जस्ट अ मिनट, ओके, सो दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, राइट? डिड मार्केट जस्ट गो, and now I'll show you what market do. This is a last swing high on a longer time period, right? So as per the theory, as per our theory, what market will do? Market will do like this, up move, hunt this liquidity. There is liquidity hunting, and now you cannot expect like what market will do. This is a fair value gap, liquidity hunt. What is market will going to next do? Just tell me, everyone. You cannot expect this, or you cannot find this.
Yep, and the market did the same. Market hunt this swing high liquidity, and then market will come to this fair value gap. And now what? Market will again now see, चलो यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, ठीक है. Now as I told you, market कुछ नहीं करता, nothing. Liquidity hunt, come to fair value gap. Now अब जब अब now अब जब मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास अपसाइड के लिए क्या बचा? दिस लिक्विडिटी नीड टू बी स्वीप आउट, ठीक है. दिस लिक्विडिटी नीड्स टू बी स्वीप आउट. सो अब अगर इसको भी स्वीप करना है तो मार्केट ने क्या किया? अब यू विल सी द रियल पिक्चर कम्स इन राइट नाउ, दैट इज अप मूव, sweep out this liquidity, come to this fair value gap, right? And now where market will gonna do? Like this liquidity, and boom, it is swept out. How simple is it? To expecting the things, to see the market, what market is going to tell you. ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले जो है ना, लाइक इस तरीके से मार्केट प्रोसेस करता है पूरी चीजों को. एंड इफ यू विल सी, लाइक दिस इज अ मंथ ऑफ 2 अक्टूबर, ठीक है. 2 अक्टूबर में मार्केट ने इसको टैप किया, राइट. इट्स अ होल मंथ कैंडल. सो अभी भी हम क्या देख रहे हैं ना, देखो अभी हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने, देखो यहाँ पे ना मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी हंट कर दी है, ठीक है. नाउ मार्केट्स हंट दिस लिक्विडिटी. क्या हमारे पास कुछ ऊपर है अभी यहाँ पे कहीं पे? कुछ फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी और स्विंग हाई, एनीथिंग एल्स? कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है, नथिंग. तो वाई मार्केट विल गो अपसाइड? हैव यू एवर क्वेश्चन अबाउट इट कि अगर ऊपर कुछ है ही नहीं तो वाई मार्केट विल गोइंग टू अप? और क्या कोई भी मार्केट सिर्फ ऐसे जाएगा, लाइक ऐसे 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 ऐसे? नहीं, ऐसे मार्केट कभी नहीं जाते. what market will do this and this and this and this, like this. market will never go in the straight form, ठीक है. तो अपसाइड की लिक्विडिटी बची नहीं है. नाउ अब अगर देखोगे, दिस इज अ मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है. 1 कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल में लिक्विडिटी हंट. नाउ as per the process, what market next going to do? Tell me, jaldi. Meanwhile, I'm just marking some fair values gap. So here we are having this fair value gap, which is untouched. और fair value gap हमेशा ऐसे देखने हैं जो कि अनटच हो. जैसे ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये अनटच था, ठीक है. ये मार्केट ने टैप किया है इस वाली कैंडल पे, राइट. एंड नाउ this fair value gap is untouched itself. So and then again we have this fair value gap, right there, ठीक है, like this one, this, ठीक है. So currently market and fair value again down जाएगा FVG, cool. So देखो मार्केट ने क्या किया. Now if you will see, like up move, liquidity hunt, fair value gap, then again continue to hunt this liquidity. Now this one, this hunt this. Now what market will do? Market will make this as a swing high, or higher something. Market will make this swing high or something like this, ठीक है. So when market will make this swing high, ठीक है, then मार्केट, देखो स्विंग हाई कब बनाएगा? ये स्विंग हाई तब बनाएगा जब मान लेते हैं कि ओके, स्विंग हाई देखो मार्केट तब बनाएगा जब ये वाला लो जो है इसके नीचे हो, और यहाँ पे एक कोई, अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे लेट्स सपोज एक कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज होती है, ठीक है.
कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज होती है, ठीक है, लाइक दिस विल बी अ मंथली कैंडल नेक्स्ट मंथ, एंड देन market what will going to do, market will going to do like tap in this zone, like this candle would be like this, ठीक है, and now where will market go, market will go to hunt this liquidity, ठीक है, like market structure is like very easy, ठीक है, liquidity sweep out हो गई, come to fair value gap and then again target this high, this liquidity, ठीक है, in case market will fail to अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे फेल हो जाता है, रिजेक्शन नहीं ले पाता और इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है, देन देन वी कैन टारगेट फ्रॉम हेयर, लाइक हम फिर यहाँ से ना टारगेट कर सकते हैं, लाइक अगर मार्केट यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं इस वाले फेयर वैल्यू आपका, विच इज अराउंड 510 पॉइंट, 548 पॉइंट, 600 पॉइंट बहुत है, इज इट इनफ और नॉट? ठीक है, तो देखो एवरीथिंग इन मार्केट इज प्रोबेबिलिटी, इट जस्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो लाइक दिस, ओके, नाउ यूएस मार्केट में तो बहुत है, देखो ये देखो मैं बताऊं, if you are saying that this is US market, if you are saying this is crypto, if you are saying this is forex or any currency or whatever, so take out things out of your mind. This is only one thing, liquidity, fair value gap. Any chart you can take it out, any chart. Like see, this, this is a 1 month chart of Nasdaq, right? I'll show you something else. Like I will show you Euro USD chart, or maybe something chart like Pakistan or something. Any index we can trade Euro USD, ठीक है, यूरो यूएसडी में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, अरे पाकिस्तान की इंडेक्स तो होती होगी कोई, ठीक है, तो if you will see in euro USD on 6 month time frame, like क्योंकि वो euro USD is always open, ठीक है, like forex is mostly time open, so if you will see what we have in this, like it's a 6 month chart of euro USD, right? So in this chart what we can see, we can see like it's a 6 month, we'll go out 3 months, okay, we'll go out 3 months, and what we will see is a fair value gap right there, which is not traded back. This is the fair value gap, right, which is already traded back. How you think market will fall from here? Like this, down. Now this, दो बार मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया है, दो बार इसको टच कर चुका है, and this time when market will go this zone, people will say it is resistance, not, will that say or not कि भैया ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो मार्केट दो बार नीचे जा चुका है, थर्ड टाइम में दोबारा से नीचे जाएगा, वी आर डूइंग दिस द सेम एंड एवरी डे, बट व्हाट यू विल सी कि ये फेयर वैल्यू गैप था, ये ऑलरेडी एक बार फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक एक बार ट्रेड किए जाते हैं, ओनली वंस, लाइक दिस, एक बार ट्रेड हो गया, नाउ इट इज यूजलेस, सो अगर सेकेंड टाइम आएगा वी विल नॉट गोइंग टू ट्रेड हेयर, वी विल जस्ट वेट, सो अब क्या होगा ना, अब थर्ड टाइम में मार्केट विल गो इन दिस फेयर वैल्यू गैप, लाइक इन दिस फेयर वैल्यू गैप, और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, देखो ये अभी लिक्विडिटी जोन क्या है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे इट्स 3 मंथ चार्ट और समथिंग लाइक दिस, ये लो है, ठीक है, बट ये काफी लो है, इतना नीचे आएगा नहीं, इट्स 3 मंथ चार्ट, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े बियरिश कैंडल हैं, देन अगेन, ओके, सो ऑन अ कंटेक्स्ट, ठीक है, कि हमें कंटेक्स्ट कैसे लेना है मार्केट से, अभी अगर हम ओके, नैस्डैक वापस कम टू दैट, ओके, सो देखो अभी हमारे पास कंटेक्स्ट क्या है, मार्केट करेंटली इन विच डायरेक्शन, टेल एवरीवन, which direction is in market right now,
upward, right? Market is currently in up direction. Now अब देखो यहाँ पे ना सिनेरियोज है, ओके, ठीक है। एंड देखो, अगर अगर इफ आई टेल यू यू कैन टेक अ एंट्री ऑन जस्ट पिन अप कैंडल, लेकिन वो देखो पिन अप कैंडल पे जब लेते हैं ना तो थोड़ा सा हमें संभल के लेना पड़ता है। इफ यू सी लाइक आई विल शो यू कि देखो, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, राइट। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट क्विकली रिवर्स टू द फेयर वैल्यू गैप राइट हेयर, ठीक है। सो एंड बिफोर बिफोर कंटिन्यूइंग दिस मूव, बिफोर कंटिन्यूइंग दिस मूव वी हैव दिस डाउन कैंडल consecutive, लगातार हमारे पास ये 3 डाउन कैंडल है। सो आइदर मार्केट गोइंग इन डाउन डायरेक्शन और आइदर मार्केट इन गोइंग इन up direction. So before this move happened, before this move happened like this and this move happened like this, we will see there is opposite candle or there is some consecutive candle to, ठीक है। So now जब जब हमें दिख जाएगा कि we are having this consecutive candles, so most of the time what you will see कि देखो this move actually में it is a bit advanced level this completely, क्योंकि देखो what I told you, should I told you a secret right now, should I told you a secret that will gonna blow your mind right now right away, okay। So थोड़ी देर पहले I was saying कि what is fair value, fair value when market gives chance both buyers and sellers, is it correct? Good. So can't we see here, can't we see here it is just, it is buy move, right? It is buy move only right now, it is buy move currently, right? There is no sellers involved in this, there is no sellers involved in this move, right? And what I told you, when market gives equal chance to buyers and sellers, that would create a fair value gap, and market always seek the liquidity, come into fair value zone, and then continues direction. So when it's a bit advanced, and you can say it's a bit advanced or something like this. So if you will see here, right, market अप डायरेक्शन में तो गया, मार्केट ने बायर्स को मौका दिया, बट इट इज अनफेयर राइट नाउ, मार्केट शुड गिव अ चांस टू सेलर्स इटसेल्फ, राइट। सो देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, जैसे ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास, तो सपोज कांट वी जस्ट एक्सपेक्ट दिस थिंग, लाइक अगर हम ये हटा देते हैं, ठीक है, दिस वन, if we will remove this, so with this chart only cannot we see like कि this move is going to happen, like this is buying, okay। Now liquidity hunt, as per our rule, Walmart, what market will do, market will do something like this, I can expect this right from right now here, market will do something like this and tap and then again, cannot we expect that thing if we know how market actually move, we can do, right। and when market, और जब मार्केट इस जोन में आएगा, जब मार्केट इस जोन में आएगा, लाइक इस जोन में टैप करेगा मार्केट, सो कैन नॉट गो टू 1 minute टाइम फ्रेम और टेक द एंट्री फ्रॉम हेयर, and one more thing, this is the liquidity now markets looking to sweep out. So if you will see the chart from here, how many point is this,
How many point is this to capture? 1821 points, right? So this this rally is like you are looking for, जिसमें 70 का प्रीमियम you will get from 700 after week or daily or something, or daily में तो intraday. So is it now very clear like what market can do, right? So देखो अभी यहाँ पे ना we are having this liquidity zone right above there, ठीक है. Now if we see what market did, right? Market come to this zone, market will come shortly. Okay, market nearby here. Okay, now लाइव हो रहा है ब्रो, मैं वो दिखा भी रहा हूँ तुम्हें. देखो यहाँ पे ना एक समझने वाली चीज है, किसी ने शायद नोटिस नहीं किया, बट किया करो भाई, प्लीज किया करो. देखो यहाँ पे अगर देखोगे, डोंट यू थिंक लाइक यहाँ पे भी तो एक फेयर वैल्यू गैप है. Why I am not considering this fair value? Why I am considering this fair value? Do you have question this? क्योंकि अगर इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है, अगर इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे हम डाउन फ्रेम में जाएंगे, डाउन टाइम पे जाएंगे, ठीक है, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया. प्लस if market is bullish, market needs to give a chance to sellers also. But अब यहाँ पे देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यू विल सी दैट देयर इज अ रिजेक्शन. और ये जो रिजेक्शन है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे इसलिए बस एक ही कैंडल बनी है, बट ट्रस्ट मी, इफ यू विल सी द मूवमेंट ऑफ दिस थिंग, दिस रिजेक्शन, like I'm taking this only, right? How many point is it? Is it 823 point movement? Just only you will get the rejection. But when this candle is formed, तो देखो अब ना एक गेम है थोड़ा सा, जस्ट अ फोकस. दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप. फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है? मार्केट को रॉकेट बनाना, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड. इज इट करेक्ट? फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है? मार्केट को रॉकेट बनाना. इज इट ट्रू? ठीक है. क्या देखो, एक चीज और मैं बता दूं तुमको, बहुत अच्छी सी प्यारी सी, ठीक है. पीपल विल से लाइक विद दिस कैंडल, ठीक है, दिस कैंडल, व्हेन दिस कैंडल विल बी फॉर्म, व्हाट जन, अच्छा मेरे को सब एक चीज बता दो, जब ये इस तरीके की कैंडल बनती है, लोग क्या बोलते हैं इस कैंडल के बारे में? देखो, पीपल विल से दिस इज अ हैमर, और पीपल विल से this is a bullish hanging man, or people will they'll say this is a rejection or something, or like, ठीक है, but what this candle is telling you कि देखो, telling this market is fair value gap पे तो आया, ठीक है, market is fair value gap पे आया, but मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया, दैट इज गुड. मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया, जो कि लेना चाहिए फेयर वैल्यू गैप्स, ओके. बट द थिंग इज, अगर मार्केट को सही में रॉकेट बनना होता, अगर मार्केट को सही में रॉकेट बनना होता, तो क्या मार्केट इस लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता? करता या नहीं करता? बट अगर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है, देन वी अंडरस्टैंड ना, market is not closing above that high. Why? Because first market needs to tap this fair value gap and then go upside. It's not that simple to expect this thing.
ओके, तो करता ना। तो देखो फेयर वैल्यू गैप हमें कहाँ पे पता चल जाता है कि फेल हो रहा है, जब फेयर वैल्यू गैप में कैंडल टैप करती है और देन उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है। अगर हाई के नीचे ही क्लोजिंग दी है, दैट मीन फेयर वैल्यू गैप, और बड़े टाइम फ्रेम पे स्पेशली, दैट मीन फेयर वैल्यू गैप, लाइक दिस गैप इज नॉट वैलिड एनी मोर। एक बार ट्रेड हो चुका है बट मार्केट ऊपर नहीं गया है। ऊपर जाना है तो मार्केट नीड्स टू come down to this second fair value gap, and then market will rally upside. And this is the same happen when we see in this chart. Market will just tap this fair values and zone quick, and then what market will target? Market will target this high upside liquidity. Did you got that? Right? PVG, FVG पूरा fill करेगा market या just tap or rocket? Just rejection. Rejection like this. This is the rejection. This is the rejection. Like come into fair value zone but close outside the zone. Valid fair value gap, come in the zone, outside and close outside the fair value gap. Okay. एंड देखो यहाँ पे क्या था ना हमारे पास कि देखो एग्जाम्पल और डिफरेंस सामने। इस फेयर वैल्यू जोन में आया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेते ही ऊपर, क्विकली ऊपर, दिस इज अ गुड फेयर वैल्यू जोन। ठीक है, बट क्या इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी? नहीं दी। सो दैट मीन मार्केट इज टेंड टू डाउन। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है इसके ऊपर निकल जाता, जस्ट लाइक हेयर। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, ठीक है, मार्केट ने टैप किया एंड देन इस कैंडल के हाई पे मार्केट ब्रेक एंड क्लोजिंग अबव साइड। इज इट गुड? नहीं, ये एक महीने के टाइम फ्रेम पे ब्रो, इसलिए आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। बट बट ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू समथिंग एज वेल। ओके, सो देखो ये है ना, अभी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी हंट एंड दिस लिक्विडिटी आल्सो हंट। ठीक है, नाउ मार्केट इज डूइंग द सेम थिंग। अभी क्या करना है ना कि हाँ देखो, टच करते ही लेना है, टच करते ही। अब मंथली तो वेट करोगे नहीं कि मंथली में टच हुआ तो ही लेंगे, बट व्हाट यू सी कि देखो अपन ना क्या कर सकते हैं कि ऑन अ बड़े टाइम फ्रेम पे जब हमें ये पता चल गया कि मार्केट ने क्लोजिंग इस कैंडल के हाई के नीचे दी है, ठीक है, मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग भी दी है, मतलब कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला हमारा नल एंड वाइड हो गया। फर्स्ट स्टेप हो गया, हो गया, क्योंकि ये मार्केट को सक्सेसफुली ऊपर भेज नहीं पाया। एंड दोबारा जब मार्केट ने चांस लिया, मार्केट ने दोबारा ट्राई किया यहाँ से रिजेक्शन लेने का, मार्केट इज अनसक्सेसफुल। मार्केट अगर सक्सेसफुल होना होता है पहली बार में ही हो जाता है, ठीक है, ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जब हमें ये वाली कैंडल बन गई, लेट्स सपोज वी नो दैट दिस कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड, नाउ आर नॉट बी अवेयर कि मार्केट ने इसका हाई तोड़ा नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट को इसकी लिक्विडिटी लेनी होती तो मार्केट यहां से कितनी दूर था, मार्केट है ना, नहीं ली। क्यों नहीं ली? बिकॉज मार्केट हैज ओन इट्स रीजन। कुछ भी मार्केट ने बिना रीजन के नहीं होता है। मार्केट को लिक्विडिटी लेनी होती तो यहीं पे ले लेगा, बट नहीं, नहीं लेनी उसको, अभी रीजन है। ठीक है, रीजन है क्यों? क्योंकि ये वाला फेयर वैल्यू गैप को मार्केट को टैप करना है। तो व्हाट इज दिस फेयर वैल्यू गैप? बिकॉज इफ यू विल सी, ये मूवमेंट हुआ है। अब नाउ आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, लाइक खोल के, ठीक है, कि ये बाइंग मूवमेंट हुआ है, मार्केट को सेलर्स को भी मौका देना पड़ेगा। दिमाग में है, सेलर्स को मौका देना पड़ेगा, मतलब कि या तो मार्केट इस जोन से बाहर निकलेगा या तो मार्केट इस फेयर वैल्यू जोन से बाहर निकलेगा। बट द थिंग इज, ये वाले फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट क्यों नहीं सस्टेन किया, या यहाँ से मार्केट क्यों नहीं रॉकेट बन गया? द थिंग इज, व्हेन देखो फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग तब होता है जब कॉन्जिक्यूटिवली दो मिल जाए, ठीक है, लाइक 1 and 2।
ये वाले में 1 2 नहीं था, ठीक है, ये बस ऊपर, एंड इसके बाद की कैंडल जो है ना रिजेक्शन बाद क्लोज होनी चाहिए थी, बट ये नहीं हुई, तो दिस इज नल एंड वाइट। अब मार्केट को हमें पता है, जैसे प्रिंसिपल पता है कि बायर्स को मौका, सेलर्स को मौका, लिक्विडिटी स्वीप। अब नाउ एक एडवांस चीज यहाँ पे ये है कि चलो ये तो फेयर वैल्यू गैप हो गया, यहाँ से तो मार्केट निकल गया वापस ऊपर, बट इफ यू विल सी फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंड, दिस इज फेयर वैल्यू डन राइट नाउ, ऑल एवरीथिंग इज नल एंड वाइट, ठीक है। नाउ you will see, I told you what is fair value. Fair value when market give buyer chance and seller chance. So cannot we feel this whole move as a fair value gap? Cannot we see this as a fair value gap? Correct, right? Now, market, see, this is a bit advanced, this is a bit quick, and now if you will see how market tap this fair value and brutal upside. This is all the game is market doing right now. This is the movement of 1969 point. Just this fair value gap and tap and go upside, right? People will wait here too, and market probably will gonna not do this. This will not gonna do, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी दूर है यहाँ से, सो मे बी इट विल और मे बी इट विल नॉट। बट अगर क्विकली एंट्री करनी है हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे थोड़ा देख के, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू फिगर आउट इट व्हाट इज एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप व्हेन मार्केट गिव बायर्स अ चांस एंड अ सेलर्स अ चांस। नाउ दिस इज अ फेयर वैल्यू लेग, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को भी मौका दिया जा चुका है। सो एज पर आर प्रोसेस क्या बोलता है, हमारा प्रोसेस बोलता है कि नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग। नाउ दिस इज आर हाई, right? This is our last high. Now, what market will do? Maybe market ने इस वाले हाई को हंट किया, ठीक है, ये कैंडल, ये वाली कैंडल यहीं क्लो ओपन हुई होगी, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, हियर यू गो। इसको अगर हम हटा देते हैं ये वाला, ठीक है, दिस इज अ फेयर वैल्यू जोन एंड नाउ ओके, ये वाली लिक्विडिटी हम हंट कर चुके हैं, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी हम हंट कर चुके हैं, सेलर्स को मौका दे चुके हैं, दैट मीन दिस जोन इज अ फेयर वैल्यू गैप, दिस डाउन मूव इज अ फेयर वैल्यू, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक इट आउट, लाइक आई कैन चेक ऑन अ मंथ weekly basis maybe, right? I can show you something on a weekly basis. On a weekly basis you will see this liquidity has been swept out, ठीक है, ये लिक्विडिटी साफ की जा चुकी है, एंड नाउ अगर हम इसको हटा दें अभी, तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है, जल्दी बताओ, मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आफ्टर दिस, आफ्टर स्वीपिंग द लिक्विडिटी, व्हाट आर मार्केट बेसिक प्रिंसिपल? No retest, it will, there is nothing retest or something, it will just tap the fair value gap, is it? ठीक है, FVG टच, राइट, बिकॉज लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये पूरा एक फेयर वैल्यू जोन ही है। नाउ इफ आई शो, I was showing on monthly basis, right now it is weekly to see more candles on it, right? So let's see what will happen. Liquidity hunt, now we are waiting for fair value gap to touch. So when market just come into this, we will quickly go into 15 minutes, 4 hours and 1 minute entry plan right now. Okay, so let's see what we can do. See how this touch the market from here, and on this, like from here we will plan something target like this is high we want to capture, राइट, ठीक है, कितने पॉइंट का मूवमेंट है, ऑल एट ओवर, लाइक ऑन अ वीकली बेसिस, अभी भी चल रहा है ना, ये तो वीकली बेसिस है, ठीक है। नाउ यू विल जस्ट सी लिक्विडिटी हैज बीन टेकन आउट, ठीक है,
अब ये 1082 पॉइंट का मूवमेंट है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. This is 1082 points movement, right? Suppose if you know already, if you develop this psychology, what is fair value, what is the basic principle of market, you will absolutely know that the okay, liquidity has been hunt, like liquidity has been hunt here. Now this is a fair value gap which is not touched yet, so market probably gonna do that. ठीक है, market probably gonna do that. And then again, what we have this liquidity here. Okay, so what on an intraday short term we can plan for till here, or till here it's also 486 point in just 1 week. So matlab, agar, just hear me out what I'm trying to say. If you know, if you know the basic principle of the market, do not complicate it. Can't you just hold a trade for 1 week or 1 month for this 1000 point movement? If you will hold, like if you will get 1000 point movement on a spot chart, let's suppose right now nifty is somewhere around 21300. If you are looking for that market is going in down direction till around 20000 or 20500, it is around 1500 or 1200 movement. Am I correct? Am I correct? If nifty will go down till 20,350 or something like that, right? So can't, if you know this thing, if you know these things apart from that shitty things about the indicator or strategy or whatever, if you know this actual things that is working in market, cannot you this just like nifty will gonna fall, suppose there is probability, like we are expecting market is gonna fall like hazar, like 1000 more points rally, or 12,000 1200 points rally. So just suppose in 1 week or in 1 month, if market is gonna fall 1200 point on a spot chart, so like currently 21,350 premium, let's say it is around 80 rupees, just suppose it is around 80 rupees. So क्या मार्केट जब 1200 पॉइंट एक महीने में गिर जाएगा, तो दिस प्रीमियम वुड नॉट बी बिकम 80 to 500 or 600? It will or it will not? Yes. So when you buy a only single lot on 80 rupees, that is around 50 multiply 80, that is 4,000 rupees. And if you are expecting a big move, and you will get a mostly 500 point, let's suppose you will get the 500 points on premium in single lot, then you know how much it would be. It would be 25,000. You invested 4,000 rupees, you will get the 25,000 just because of your analysis that yes, I am correct, I'm gonna trade this. If I'll get a stop loss, that's okay. I'll find out the reason why I'll get a stop loss. So you know the how the psychology works to make money in the market. If you expecting the move, if you know the move is coming on, you can hold the trade for 1 month, and 80 rupees premium would give you 200 point, 300 point on a single lot. This is the thing. This is the thing you need to know about how market moves, how market will not move. है ना? EMA काम नहीं करते, strategies काम नहीं करती. Trust me, they will never gonna work out. क्योंकि मार्केट में सिर्फ कुछ चीजें ही काम करती हैं, विच इज एक्चुअली मार्केट इज गोइंग ऑन. एंड चलो ये आ गया ना समझ में, हाउ मार्केट विल अप फेयर वैल्यू लिक्विडिटी ग्राफ. नाउ व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग ऑन अ मंथली बेसिस, लिक्विडिटी हैज बीन टेकन आउट. ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी हैज बीन टेकन आउट हियर, दिस लिक्विडिटी हैज बीन स्वेप्ट आउट. Okay, now what happened? We have this fair value gap right there on a monthly basis in this chart, right? Okay, and do one thing, like delete all this thing because it is already has been used. Always do this when any fair value gap, any order block,
has been used, just delete it because you will get confused later on it. Like support and resistance, people will like लोग support resistance एक एक महीने पहले का बना ले रहे हैं, 6 महीने पहले की लाइनें खींच ले रहे हैं कि हाँ 6 महीने पहले मार्केट यहाँ से गिरा था, आज फिर गिरेगा. लाइक आर यू सीरियस अबाउट इट? 6 महीने पहले क्या हुआ था? एंड अगेन 3 कैंडल फॉर्म हो रही है. हाँ, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, लिक्विडिटी हंट हो चुकी है. ठीक है, टॉप बनाया जा चुका है. ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन, द थिंग इज मार्केट विल कम डाउन लाइक दिस. अब देखोगे यहाँ पे अगर, ठीक है, विल सी अबाउट इट. यहाँ पे देखो, ये 3 कैंडल बन रही है, लिक्विडिटी हंट हो चुकी है. नाउ व्हाट, नाउ द थिंग इज कि हमें मंथली पे भी कैंडल को ये पूरा होने में टाइम है. सो वी विल गो ऑन अ 1 month, 1 week time frame, and we'll see if we can find it out or not. Something. Okay. So there is, you can see right there on a weekly basis. Okay. Right. Okay. 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 That's it. Right. So on a weekly basis, you will see like from here, it is the same from 23 October at all. Right. And if you see, what you will see, this liquidity has been taken out. Is it correct or not? This liquidity has been taken out on the weekly time frame as well. Now, what market will going to do? After liquidity creation, market will going into this one. But right now you will see in the monthly time frame what we see, one candle touched this but did not close above this high or something. Okay, and that was a bearish one also. Okay, now liquidity sweep out. Okay, create this liquidity again, that is swing high, and now tap to fair value zone like here, like this, and then from here we will target this swing high first, this swing high. And if you will see the movement for this, you will know how much it is. It is 470 point. Okay, on a weekly basis you will this target, right? And then again, once this liquidity sweep out, once this fair value gap has been drop out, now what you have to do, then again, once again fair value gap, but fair value gap, like see, like here it is touched and closed in this fair value gap. That means this is null and void right now. This is null and void, right? So what market will gonna do? What market will gonna do next move? Do you know what? Anyone know what market will gonna do next move? What kind of move market will gonna do? जल्दी जल्दी बता दो. नो, नहीं पता. ओके, सो चलो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, पर शायद पता लग जाएगा. ठीक है, नाउ सेम, सी देखो, process is same, market behavior is same, everything is same, just the time, 1 week has been changed, right? So देखो, as you see this one right there, this one right there, what is this? It's an up move. This is up move, right? This is up move currently, proper up move. Yes, yes, it is proper up move. This is unfair, this is imbalance. Market needs to balance this, market need to make this fair
from unfair. So what market will do? Market will come down. Market will give chance to seller itself to make the fair price action. So if you will see, we are have this leg. We have this leg like from here when seller got the chance like this. Is it not the fair value itself when market tap and go? Liquidity sweep come in again. Let's again this liquidity has been dropped and then fair value gap and then brutal upside. It is that simple. Now if you will see, market is currently what is market doing right now? Market is doing currently up direction on a longer time frame. Is it true or not? Yes, it is. So what is this? Is fair price action or this is unfair price action? This is imbalance or this is balanced one? Unfair, right? So if market needs to make this balance, what market will wanna do next? Market will give the chance to seller to enter in the market, right? Just like this, somewhere like this, right? When this leg has been created, that is a fair value. And now in future, I'm just telling you like what next step would be. So this would be our fair value zone. And when market like will do this selling and then market do this go upside, right? And wait for this to touch here and then quickly move. That is the whole procedure of market. Imbalance, balance, so liquidity sweep out, fair value, and then go. Then go. See how I am expecting this move. See, there is reason. This is the complete buying. Okay, there is nothing above that, and also what you can see in this chart. If we see, right, if we see market is currently bullish. If we see सारी चीजों के confirmation एक साथ, when you are planning a trade, conclude all this thing, right? So here is one fair value gap. What you see, if markets need to go here, if market needs to go upside like very quickly, like market like this is a valid fair value zone. Market has come here, okay, it is good. Market has come up here, like market has come and close, market and come and close. So this fair value is not going to push the market up. So if market is not like, if this fair value is not going to push up the market on the weekly, I'm telling about the weekly time frame, but when you go into daily or when you go into hourly, you will find out the fair value gap. But on a longer vision, what I am saying, like this move, do you really think it's an fair value move? Like this is fair value gap move or it's manipulation move? It's manipulation move. Okay, it's a manipulation move. Manipulation, that's good, right? So also this is not a fair value. So what is fair value, right? See, we can consider as well like before this buying, and if you will see like a bit, like there is a bit this down move before this move happen, before this up move happen, there is down move.
we can consider this fair value gap now, because buyers got the chance, seller got the chance. And if you see, this would be near around, it is something about, yep, it is something about 700-point rally downside. Okay, so buyers get the chance, sellers get the chance right now. And what I am expecting, I am expecting to price to like save this liquidity. This would be high and this should not be broken or something. like अभी यार देखो, इसमें ना 4 दिन बचे हुए हैं, वीकली कैंडल या फिर 4 घंटे, कुछ भी बोल लो, आई डोंट नो, इट इज 4 घंटे, 4 घंटे हैं वीकली कैंडल क्लोज होने में, एक फेयर वैल्यू गैप बन भी रहा है। तो पॉसिबली व्हाट इज हैपन, लाइक साइकोलॉजी, maybe some smart money trader will see this fair value zone. Will they see or not? Some smart money trader, will they see or not? बता दो चैट पे जल्दी, will they see this as a fair value gap or not? They will see, but, or, but see, this is also a fair value, but if market will not create this high above, the will mark, if market will not close above this high, that means market is probably gonna trade in this fair value zone, and most importantly this fair value zone. So what I am expecting, I'm expecting minimum market to be fall around 16,976, and then our target would be this high. So this is how you can play and plan trade, right? Up, see, like if I'm saying like market is going to do this and this, so let's see. Okay, we remove this, we just make this line, and this is also this called an order block. This called an order block. Order block I will teach you in next session. Okay, order block is something like, देखो कोई भी मूव हैपन होने से पहले either is downside, either is upside. अगर upside है तो 2 या 3 consecutive candles, just like मौका देता है sellers को. So this is a fair value zone, and this top, like opening price, this is something, this is the order block. So what is actually make this strong, that is combination of order block plus fair value gap. So this is most strongest one. Market will not gonna come below this, market will not gonna come below this, not will gonna close below this, mark this pin and then upside. Okay, अब now let's see what we can see on, like, see देखो अभी हमारा क्या है, मंथली बेसिस पे भी हमारा सेम मोटिव था, and to sum up all this thing, this is a fair value gap right here, बट ये बन रहा है अभी, ठीक है. सो आई कैन नॉट, जस्ट गिव मी मिनट, समवन इज रिक्वेस्टिंग टू ज्वाइन. ओके, यप, सो ये वाला फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है. नाउ इफ वी कम, हमारा मार्केट का सीधा सा फॉर्मूला क्या है, अभी मार्केट बुलिश है, ठीक है, बुलिश है तो सीधी लाइन में जा नहीं सकता, ऊपर लिक्विडिटी है नहीं. व्हाट मार्केट नीड्स टू डू, मार्केट नीड्स टू रिट्रेस अ बिट लिटिल टू दिस जोन. ये हमें है कि मार्केट गिर सकता है, ठीक है. नाउ वी कैन सी इन वीक, लाइक वी सॉ इन वीकली. ओके, दैट्स इट. एंड वीकली पे अगर हमें पता चलेगा तो व्हाट वी आर सीइंग दिस रिजेक्शन. सो हमें पहले से एक्सपेक्टेड है मार्केट एक डाउन मूव देगा, देगा कि नहीं देगा, इज इट एक्सपेक्टेड? ओके, then what on the monthly basis, on the monthly time frame, we expected a down move. When we come on a weekly, it will taking a rejection. It is not a bonus to our theory. Then okay, market is getting the rejection, it will be plus point for us, is it or not?
Yes, confirmation, right? So now what we can see, let's go on the daily time frame now. सो देखो सारे टाइम फ्रेम के ना कंक्लूड करने पड़ेंगे. मंथली हमें क्या बोल रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा. वीकली हमें क्या बोल रहा है, यस आई एम टेकिंग द रिजेक्शन, आई एम गोना डाउन. टू confirmation on the two time frame, and every time frame should be align in single direction. मतलब एक डायरेक्शन में सारे टाइम फ्रेम्स वही बताने चाहिए जो मंथली बता रहा है. स्क्रीन एट नॉट विजिबल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट ब्रो. ओह सॉरी बडी. कूल. चलो नाउ इट्स विजिबल. ओके नाउ सी देखो how to plan trade, like this is a procedure. मंथली पे स्क्रीन आ रही है अभी, जल्दी जल्दी बता दो दोस्त, स्क्रीन आ रही है. कूल. ओके सो मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट हमें क्या बता रहा है, यस वी आर स्लोली टर्निंग इनटू बियरिश. ओके वीकली पे हमें क्या बता रहा है, यस आई एम टेकिंग द रिजेक्शन, वी आर गोइंग टू टर्निंग सम बियरिश मूवमेंट टू दिस move, like this level, this zone 16976, right? So monthly is aligning the same, weekly is saying the same. Is it plus? Now we will focus on the daily time frame. So on daily, what are we looking? What are we looking? Like, okay, this is the zone where market needs to tap and go upside on a daily time frame. So here we can find a one fair value gap on a daily time frame which is bullish, and also which is already used by this candle. Is it used by this candle? Now see, this is tap and then go, and you know how this much move is it? Is it 379 points, right? Okay, so now this is not a valid fair value gap. Okay, so now what needs to do? Now, if we see market is currently up and not going up, this like this is also not a fair value gap, because this fair value gap 1 2 3, this is fine. क्या इस तीसरी कैंडल के बाद इस फेयर वैल्यू गैप के फॉलो अप के लिए ये वाली कैंडल क्लोज हुई है इसके ऊपर, यहाँ पे इसके नीचे इसके ऊपर क्लोजिंग दी है या इसके ऊपर गई है, एक्सपेंशन किया है मार्केट ने, नहीं किया है. तो ये जो मूव है, व्हाट इज दिस मूव? दिस मूव इज अ मैनिपुलेशन मूव. दिस मूव इज अ मैनिपुलेशन मूव वेयर एवरीवन सी यस ओके वी डिड. देखो इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी, इट्स अ अप मूव, retracement, up move. Now when everyone is expecting to this retracement and this up move, everyone is seeing the same, right? Up move, retracement, higher high, higher low, higher high, higher low, and then higher high. But this time it will not gonna happen because there is no liquidity upside. And see, market इस लिक्विडिटी को हंट नहीं करेगा, मोस्ट प्रोबेबली हंट नहीं करना चाहिए मार्केट को. अगर मार्केट, क्योंकि देखो अगर मार्केट इसको हंट करेगा, दिस विल बी हंट, सो दैट इज मंथली, वीकली or daily is not aligning with each other in the same direction. Will it? Is it or not? To continuing in the same direction, every time frame should you tell the same story, which is monthly, which is weekly, and which is daily, right? So on the daily time frame, we see we created a fair value gap, but the other one follow-up candle would be not there. So what market is telling us, dude, I'm going to be bullish. Okay, let's see, right? Okay, market is going to a bit bullish, let's see what we can do, right? So let's go to 4 hours chart, right? Let's go to 4 hour chart. And one more thing here, on a daily time base, you can see it's what is it? Is it liquidity? Right. So now the thing is completely changed.
On the bullish side, like in the monthly time frame, we are a bit bearish. Okay, just hear me out. On bullish, on monthly, we are bearish that we need to go to tap this zone and to come higher. Okay, on weekly, it is the same. Market is taking the rejection from here. Okay, on daily, what market is saying? Market is saying that this is a liquidity zone, this is low and this is high. अब मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मार्केट को इस हाई को हंट करना होता तो क्या मार्केट यहां से हंट नहीं करती? यहां से थोड़ा सा और ऊपर नहीं जाके हंट करके आ सकती थी नीचे? क्यों मार्केट को नीचे जाना है फिर हंट करने जाना है? Because it is the procedure of market, it is the principle of basic. So cannot we see what market do? Market will do liquidity sweep out and then come to fair value zone. So in this scenario, what market needs to create like this, and market needs to create, you know, here, like market need to create on like daily basis or something like this. Market will take this liquidity, market will create, or the 4 hour or 1 hour a bearish fair value gap like here or something. So market will follow its agenda, that is sweep out the liquidity, go to that fair value zone, and then again come to this zone and come to hunt this liquidity and tap this zone, and then again continuously to this. Sorry, just mark out this thing. Okay, so is cannot we expect this thing? Like what market module is liquidity sweep out, go to the fair value gap, then again continues with direction. But when people will up, see, I'm telling you the truth, when this zone is pre touched up, many people will say like, okay, from market fall, and also this time is support is break and market is going to fall. Is it the same? People will think the same, right? And then when people will believe that market is going to fall, like lower high, lower high, and then lower low, and then it will like this. But no, because on a monthly basis we have this fair value zone or we have this order block. So on a monthly basis we have order block for this bullish side, right? So there, in that case, we will go upside, right? Okay, I'm telling you something else as well. Like this is the low. Just keep remember the market module. Liquidity sweep out, go to fair value gap, and then continue to direction, right? So we see monthly, weekly, daily. Like on a monthly basis, we are completely bullish. We are seeking a retracement to fair value gap. On a weekly basis, we are bullish. We are taking the rejection or like tend to continue through the fair value gap. On a daily, are we same? Bullish, seeking a retracement to this level, this order block to take the pending orders and go upside. Are not we on the same page on a monthly, weekly, and daily time frame? Or are we? Good. Right. So let's dive into 4 hour time frame. Right? Weekly, monthly, and there you will go. Here the story begin. Now, what you will see? You will see a fair value gap, but it's a bullish fair value, right? Market come to this zone, but can see market come to this zone. Did market try to go upside? Yes, it is. It take the rejection, but it cannot. It is not, because if market wants to continue, then market should need to take the rejection and go upside. But it is not the same case, is it? Or it is not? Not, right? So
what are we seeing? Are not we seeing that on the see, I'm repeating it again, on the weekly, on the monthly, we are completely bullish. We are seeking a retracement to the fair value. On the monthly, on the weekly, we are same bullish, seeking the retracement to fair value gap. On the daily, we are good. We are doing the same. On the 4 hour time frame, are not we taking the rejection from this zone like 1, 2, 3, 4, 5? 5 4 hours कैंडल टेकिंग द रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन. अगर मार्केट को यहाँ से लिक्विडिटी हंट करनी होती तो मार्केट क्या इस फेयर वैल्यू को टैप करके लिक्विडिटी हंट कर सकता था या नहीं कर सकता था? मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आया, लाइक टैप दिस जोन एंड हंट दिस लिक्विडिटी. पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट? मार्केट का स्ट्रक्चर है. नो, बट देयर इज अ केस. Why this fair value gap is not valid is more, क्योंकि मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप कब करता है? When liquidity has been sweep out. But if you see, this is the liquidity on this high, it is not sweep out yet. Then why market is going to this fair value gap? Is it? It is not making sense from market to go in this fair value gap and then putting this. No, it is not making any kind of sense there, right? Sweep out the liquidity, then go to fair value zone like this, like something like this. This is a fair value zone. This is the top high. Market, see what market did. This is the high time frame, something like here, right? So it is the same thing, but here is no any sense to go to market like this zone. No, it is not. Or also, is this zone taking, market is trying to take the rejection and go upside, but it is fail. Again, second candle is fail. सी देखो, बहुत सारे लोग ना, तुम बताता हूँ, बोलते हैं ना कि भैया ये रिजेक्शन आ रहा है ना, बाइंग रिजेक्शन है, ये बाइंग प्रेशर है, इसलिए मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाके बंद हुई है. सब बोलते हैं ये बात, राइट? बट इफ यू सी, market ने try, what market is actually telling you, you have to see this. Market is telling you, okay buddy, I have come to this fair value zone, I tried to push higher but I am unable to do that. But and the second candle is telling you the same, I tried to go upside but I am failed. So when 2 time market is failed to go upside, why you are thinking that this is a buying pressure? Is there any point to think that, oh, that this is a hammer, or oh, this is a buying pressure, this is a rejection? No, this is trying, market is trying to go upside, but it is not. Second candle, market trying to do same, it is not. Market direction has been already changed right now, right? Market direction is changed. Like now, what we are having monthly, weekly, daily, also 4 hour 4 hour time frame. Are those four, like monthly, weekly, daily, 4 hours, align the same and telling the same story or not? All these time frame are telling the same story, right? So is this a good probability plan to execute your trade when everything is going aligned in one direction? Nothing is going apart from your direction. This is how you analysis, how you trade, how you plan your trade, right? This is the thing you have to do. Now in 4 hours, what we can see in 4 hours, what I can see, it's in this load right there, okay, and cool. And also what I have told you earlier, that is, okay, just give me a moment, wait. So on 4 hours, this is low. Now we will go on to 1 hour time frame. If we are in 1 hour time frame, just give me a minute. Okay, so this is a high, ठीक है,
and this level market needs to tap to go upside and hunt this topmost liquidity. Okay, so on the 1 hour time frame, now we have, like, on the monthly time frame, we are bullish seeking a retracement. On a weekly, we are bullish seeking a retracement. On a daily, we are taking the rejection and turning into downside. On a 4 hour, we have changed the direction, turned into downtrend, and in 1 hour, we have changed the direction itself. Is it right? So these things you can align with your theory, like, okay, everything is going in same direction, okay, let's trade. सॉरी. ओके, सो देखो, यहाँ पे अगर देखोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम फुल कैंडल में दिखाएं तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है. बट द थिंग इज, this is a bullish fair value gap, but this candle have disrespected this fair value gap. So when one opposite candle, like, it's a bearish fair value gap, right? It's a bearish one, and then this candle should not be close inside this. It's make the pin and go upside if it's really want to do. But no, why? Because monthly seeking the downside, weekly seeking the downside, and daily seeking the downside also. 4 hour change the direction, right? So what you need to do, you need to check out, okay, now trend has been changed. Okay, there is fair value gap, but this is one fair value gap, right there also. But you can see, right, this is a fair value gap, but this candle is saying some other story, right? Also, this is a gap up thing or something like this. So this is also traded, this fair value also traded already, and is it not null? It is null and void right now. Okay, it is null and void. Okay, so what we can see, also, now we have to check it out. Okay, what we have more in 1 hour time frame, we have this liquidity zone right there. Okay, and okay, we have this fair value gap, right? On the 4 hour, if you will see, you will not get any fair value, I believe. Yeah, there is it not, right? So in 1 hour we'll go. Okay, in 1 hour when I'll go, this is the fair value gap, right? And also, also you can see this movement, right? There's a buying movement, sellers invited. When sellers invited, right? See, this is the fair value part, but this is a fair value part for those, for buyers, but it is not the case. Market trying to do, and market is going to do the downtrend continuation, right? So this is a fair value gap. Okay, now if we see, like, we are some consolidation or something like this, and I'm expecting, what, key, this is equal highs or something, you can say it. Okay, on the 1 hour time frame, is it equal highs, and this is a bearish fair value zone. But is it not valid so much? Because it's only one fair value, like this one, and the following candle is not there. Like, is it not like this closing and this closing? This is down, upside, upside, right? So we will wait for this. Like, we will wait for this to come here. Once it come here, we will go into the 15 minutes time frame, or to place the trade, right? So this is the whole picture about it. Now if we'll see, it's a liquidity right there. This is the fair value gap. Now what market is doing that, okay, this is the fair value. Once I will go, I will reject, but it will not until, see, it will not.
It will not, because market doesn't sweep the liquidity, right? So market will sweep the liquidity, like, or this liquidity or something this. Okay. So meanwhile we can just wait. We have to just wait for our setup. Either market go to this, like this one, क्योंकि ये 15 मिनट्स का चार्ट है, राइट? और ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो 1 आवर का है, तो विच इज मोर स्ट्रॉन्गर? इट इज 1 आवर फेयर वैल्यू गैप. So let's see if we'll go to this zone, like market is currently going on, and this is the same thing. And if you will see, I have shared you this trade momentum, right? Which is a early entry I have placed and got the same, like it is the same, like we got the same move, we got the same and everything. So it is a simple thing. You just have to wait now for your setup. You have said like this is the liquidity, this is liquidity, this is fair value gap. So this is everything is fine, right? You just have to wait. You have completed your analysis. Like okay, we are continuing in direction. We are continuing in down direction. So just be wait for your setup until unless it has been there. Do not place your trade. That's it. That's it. Do not place your trade anything. Don't try to place your trade anything. Or I'll tell you the one thing. This is where market gonna tap this zone, because it's an order block. This is an order block where market trying to get this and fall down, right? This is the order block. So this is all about today, guys, right? And if I show you something, like, just give me a minute. Okay, so is it for today? Like we are ending this session. I'll remove every drawing and I'll show you something on 1 minute, right? I'll show you something on 1 minute right there. How you can think the market, like it's a 1 minute. Randomly I have put this on market. Okay, what we have right now, we have this swing high, you can expect it, and we are having this swing low, right? We have this swing low on 1 minute. I'm not seeing any zone above or this side, like I have cleared all this. I'll just try to focus on this chart, right? I'll show you something. Okay, so like it's a 1 minute chart, right? It's a liquidity right there. It's just liquidity right there. But if you will see, like this is the fair value gap. The bullish fair value gap on the 1 minute. Do not press more into it, right? And right now, because this is the continuation fair value gap, which is already has been filled. Like here you can see upside, 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 right? So it is fair value gap, right? It is mitigated, right? It is mitigated. Remove this. Now this is liquidity. And what market has been created? Market has been created downside fair value gap. So what I'm expecting, clear out this liquidity and go to this fair value zone. Like this liquidity need to wipe out, and I'm expecting to go into this zone and then fall like this, as per the market principle. So this is the thing. You can expect the movements. You can do the lot of things with experiment. You will notice the thing, but just do not go with EMAs, 9-15 minutes candle or something like that. This is not going to work. The only thing work is going to liquidity, fair value gap, and order block. That's it. That's it, right? Or should I show you one thing? Like this is a up move. This is a completely up move, right? What market gives? Market give here fair chance to the sellers itself, right? So cannot it be fair value? Is it right? It can be a fair value.
let's see, because it's in 1 minute, I cannot trust much into this. But let's see, it's a 1 minute time frame, but I'm expecting market will go touch this and fall. So what we can expect, like it's a 1 minute, so I'm not taking it very seriously. But here, so what we can do, we can just place our orders like this. But you know why it is decreasing? Because upside is lot of liquidity available, right? But let's see, if I'll do this and I will target this liquidity right there. How much risk reward I'll get? Like this, and okay, more than 2.5%. Okay, so you will see something. Let's wait. I'm expecting this move to be like this, this up move, this down move, which is the fair value gap, right? Which is the fair value gap. Now this, and we are expecting this. Now this liquidity has been swept out. So I'm expecting to go into this fair value zone, activate my order, and down to hunt this liquidity. So let's comment, like chat में बता दो, क्या ये movement possible है? Is it possible? Yes, it is. But if you will see, right? Okay. देखो, see, when you give time yourself to see the chart, what you will see, this is somewhere creating a M pattern, right? This has been created as a M pattern, right? On the 1 minute time frame. On 1 minute time frame, who are active when this neckline of M pattern will be broke, like here, like here, like here. Okay. So see, what I'm telling you, this is a M pattern, right? And retailers know very well when this neckline is broken, what to do. Take the sell side trade. Am I correct? Am I correct, right? Right. So market, like, just broad your vision to see the market. Okay, what I am saying, market do the up move, market gives the fair value chance to, to the sellers. But here is the catch. Here is the catch. Like, why? Okay, if I'll tell you this something, like, remember this picture. Okay, this M pattern picture, just remember it. I'll show you something. We'll go into 1 month and give me a minute. See, okay, so right there, right? So what we have this move, this buying move. Okay, we have this selling move, right? And then this up move. This should be up move. This should be up move because this is a fair value. Market chance seller, market gives chance to seller and go upside, and then market will need to touch this fair value gap and then go upside. Is it the same or not, which I told you earlier? Is it the same, right? How market move, right? But market is not going upside, not hunting this liquidities, so market will not come to this fair value zone. It is not the case.
So what it is, this is the trap, you can say, this is the trap or something which market wants to, do. Market wants to take you something, right? So this is, you can say, it's a trap or something, right? So until unless you will get the confirmation, do not place your trade, right? Do not place it. Yeah, honestly, I'm not believing in 1 minute mostly. I'm only just believing in 1 minute entry time frame. Okay, now what happened in this candle? Okay, I'll try to read candle one by one. Okay, let's see what we will get. Okay, here we go, here we go, here we go. Right there. Okay, so this is what I am seeing in the market. This is a low. Okay, and this would be our fair value here. This is right, and this would be an order block too. Right. So what I am seeing, just a minute. So what our psychology is? Our psychology is, see, there is no fair value gap available downside, right? So when there is no fair value gap available downside, why market would hunt this liquidity first and then downside to this? No, right? Market, just a minute, okay? Just see the chart. Here you go, right? So this was the, this is, okay? Markets touch, go, close there. Okay, and market is not going to expand, no, it is not, until unless what we can do, like यहाँ पे market अगर है, इसने touch किया है fair value को, if this is real fair value, market needs to fall down very quickly, but it is not doing the same case. So what we are seeing this target to sweep out, or this one first we need to sweep out, right? And then what will happen, and then if this need to be swept out, this will very quick and will create the fair value gap. So sweep out this liquidity, come to this fair value gap, and then like will quickly towards to hunt this liquidity. That's it, right? So this is how you can plan your trade, how you can analysis, and let me know what you think about this lessons. Like, is this life changing or trade changing or whatever is it? So आज के लिए बस इतना ही है bro. Next time we'll do something else. I'll try to regular this series on live markets with Nifty and Bank Nifty, so you will get a lot of knowledge every day by seeing me how I am trading. See, like there, what I said in 1 minute, like market need to hunt this quickly and will create this like यहाँ पे fair value gap, something like this market would create, or like this, right? And then something, this will happen later on, but right now it's too long stream. I have lot of like I have told you a lot of things about it, right? So आज के लिए इतना ही, और बाकी let's see what we can do. Okay, so good night, bye bye.